श्रीसाईश्वरं सुन्दररूपं कनकाम्बरधरं करुणामूर्तिं सर्वजनप्रिय प्रेमस्वरूपं पुटपर्तीश्वर सत्यनारायणं Om Shri Sai Ram. Our humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Loving Sai Ram to all. Aujourd'hui, nous tous nous réunis pour célébrer l'anniversaire de nos beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Brother Shivraj, est-ce que vous êtes capable de dire moi que cette année-ci, Bhagwan, il a gagné? Effectivement, Swami Salanena il peut gagner 98 ans. 98 ans of pure love. Et cette année-ci, le thème c'est Every heart, Shri Satya Sai ke saath. Et aujourd'hui, le Shri Satya Sai Overseas Organization Mauritius in réunit tous les wings afin que nous capables d'offrir à Swami un programme. Et sans plus tarder, nous commençons avec une session de Vedam chanting par les SSC students. गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीः पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ
Nous remercions nous ban SSI students pour sa jolie Vedam chanting là. Vraiment, c'était une session très émouvante et nous tenions à remercier Sister Madhvi Magu, Sister Anusha Apadu et Sister Prema Lachman qui coordonnent sa session de Vedam chanting là. Et en parlant de Sister Prema Lachman by Shiraj, c'est nous National Spiritual Coordinator et nous pouvons avoir la chance d'écouter que un peu l'autre activité qui nous fait dans le Sri Satya Sai Overseas Organization de Maurice. Om Shri Sai Ram. Chaque année, ban dévot de Bhagwan Shri Satya Sai Baba célébrait cet anniversaire en grande ferveur à travers le monde. C'est un jour très spécial que nous rechargeons nous-mêmes spirituellement avec ce ban message que nous contempler et nous prendre une résolution pour mettre en pratique ce l'enseignement. Un de l'enseignement de Bhagwan Shri Satya Sai Baba, c'est Love and serve your country. En tant qu'un citoyen, nous avons un devoir envers nos pays. D'abord, nous avons besoin de garder l'environnement propre et préserver la nature. Voilà pourquoi le Sri Satya Sai Organization à Prashanti prend l'initiative pour planter 10 millions de plantes à travers le monde jusqu'à la célébration du 100e anniversaire de Bhagwan qui tombe en 2025. Et Maurice aussi, il gagne la chance pour participer dans ce projet-là. Bhagwan établit une institution, que ce soit l'éducation ou médicale, que l'on prouve qu'il est possible d'offrir une éducation de haute qualité gratuitement. L'on aussi met à notre disposition un traitement médical le plus moderne, sans même prendre l'aide du gouvernement. Les bons notés qui à Maurice, nous avons l'école Sri Satya Sai, qui trouve à Vakwa, que nous avons une centaine d'élèves repartis dans pré-primaire et primaire. L'école met l'emphase le développement de caractère de nos enfants à travers l'enseignement de nos valeurs humaines, ensemble avec l'éducation académique. Et le taux de réussite dépasse les 90% au niveau de l'examen PESAC. Dans Maurice, nous avons plusieurs centres et groupes qui peuvent travailler dans une seule direction pour promouvoir la paix, l'unité et l'harmonie. Par exemple, nous avons le Spiritual Wing qui occupe l'aspect spirituel comme organise une bhajan session, traîne ban chanteurs et ban musiciens à travers ban bhajan classroom et aussi propage et organise ban classe de Vedam à travers l'île. Nous avons le Education Wing qui assure le bon déroulement de ban classe Bal Vikas pour ban enfants de 5 à 17 ans et aussi organise une classe de valeurs humaines dans la communauté. Bhagwan dit service to man is service to God. Voilà pourquoi nous avons le Service Wing qui occupe tout type de services qui nous capables d'apporter à la société comme Blood Donation, Narayan Seva, que nous aidons les personnes qui ont besoin, et le Gram Seva, que nous apportons le soutien dans l'endroit qui est affecté par une calamité comme l'inondation, cyclone, etc. Nous avons aussi l'encadrement de nos jeunes à travers le Youth Leadership Programme et d'autres projets comme Serve the Planet. Et sans oublier, nous avons le Ladies Forum qui organise des workshops, training et plusieurs activités pour les madames. Alors, qui fait nous besoin rendre nous-mêmes utiles et engage-nous dans une activité pareille?
c'est pour nous capables réaliser la divinité qui trouve dans nous. Bhagwan Sri Satya Sai Baba, il fait nous comprendre que nous, êtres humains, nous appartenons à une seule race. C'est la race de l'humanité. C'est nous l'apparence qui est différente de l'extérieur, mais à l'intérieur, nous tous pareil. Nous tous ayons l'équerre, nous tous nous disons rouge et nous tous respirons un seul air, l'oxygène. Alors, comptons tout du monde pareil et un respect pour tout un chacun. Et ensemble, nous contribuer pour apporter la paix, l'unité et l'harmonie dans nos pays et dans le monde. C'est même plus joli cadeau qui nous capable d'offrir Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Jai Sai Ram. Nous remercions Sister Prema pour sa jolie speech-là et vraiment, Brother Shivraj, il vient éclaircir nous le combien l'organisation fait de Maurice. Effectivement, nous avons une vidéo de toute une activité qui nous fait à Maurice et aussi à Prashant Nilayam. Om Sai Ram. Le Sri Satya Sai Overseas Organization Mauritius, c'est le mouvement Sai qui est reconnu et qui est affilié avec le Sri Satya Sai Global Council, dont le siège se trouve dans la ville de Puttaparthi, dans l'état de Andhra Pradesh en Inde, le lieu de naissance de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. C'est à Puttaparthi même que Bhagavan Sri Satya Sai Baba passe toute sa vie jusqu'à qu'il prend le Mahasamadhi le 24 avril 2011. À Maurice, il y a 88 centres Sai Baba qui est affilié avec le Sri Satya Sai Overseas Organization Mauritius et sa bande centre-là regroupée en 8 différentes régions. L'organisation très bien structurée est représentée par le National Council au niveau de l'île Maurice. Chacun des 8 régions a un comité régional et chaque centre ou groupe a son propre comité exécutif. L'organisation Sri Satya Sai a 3 piliers qui représentent ces 3 ailes principales, le Service Wing, le Education Wing et le Spiritual Wing. Caractéristique unique de l'organisation Sri Satya Sai réside dans le fait qu'il y considère Seva, c'est-à-dire Selfless Service, comme une forme de service à la divinité qui trouve dans chacun d'entre nous. Le Sri Satya Sai Overseas Organization Mauritius les reconnaît comme un plus grand organisateur Blood Donation dans l'île Maurice, avec environ 60 Blood Donation Camps qui sont organisés depuis le commencement 2023, plus que 4500 pintes de sang sont collectées et remettent à Mauritius Blood Transfusion Service du ministère de la Santé. Bandez-vous et a une pensée spéciale aussi à nos bandes frères et sœurs avec une incapacité physique. Chaque année, il y a un jour qui est dédié à sa bande sœur et frère-là, c'est le Disability Day. Plusieurs activités organisées ce jour-là et bandez-vous partagent un moment rempli de gaieté et d'émotion avec eux. Une activité sur l'éducation couvert un programme qui communément appelle le Bal Vikas ou l'éducation de valeurs humaines pour les enfants. C'est un combiné de l'enseignement académique formel et de valeurs humaines qui développe caractère des élèves de tranche d'âge de 6 à 15 ans. À part classe Bal Vikas qui fait fréquemment dans certains centres, l'organisation Sri Satya Sai organise aussi régulièrement différents programmes spéciaux pour ces élèves-là et aussi pour ceux qui suivent classe IHV.
afin d'inculquer un enseignement de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. L'Education Wing organise aussi un quiz et elocution contest pour les élèves Balvikas. Dans le village de Bambou, il y a un programme spécial de suivi pour les enfants défavorisés. Depuis quelques années déjà, l'organisation Sri Satya Sai organise une activité comme une fête culturelle et activités sportives. Si le Service Wing et le Education Wing adressent un besoin de la société, le Spiritual Wing prend en charge le développement spirituel de l'individu. Et ça, il est possible à travers différentes activités organisées dans un centre, comme le Bhajan Singing, le Study Circle, une conférence publique, séminaire et aussi une session de méditation. Bhagavan Sri Satya Sai Baba met beaucoup l'emphase dans le Vedam chanting. De ce fait, plusieurs centres organisent fréquemment une session de Rudram chanting et aussi le National Spiritual Wing organise chaque mois le Ekadashi Rudram chanting. Dans sa optique pour augmenter notre spiritualité, le Ladies Forum qui organise une retraite contiennent plusieurs activités comme des causeries, le yoga, démonstrations artisanales, etc. Plusieurs activités sont organisées aussi pour les jeunes de l'organisation pour le développement spirituel. Un workshop est organisé l'année dernière sur le thème de Sai Elite Preps, qui réunit les jeunes pour guider leurs choix de carrière. Les jeunes organisent une randonnée découverte à Benares en octobre. Cette activité-là qui aussi inclut un workshop de photographie et une session de team building. Bandevo de l'organisation Fingen l'occasion participe dans 3 événements importants pendant le mois de juin et juillet 2023 à Puttaparthi. Du 30 juin au 2 juillet, 17 jeunes qui participent dans le Sri Satya Sai Young Adults Leadership Program for Self-Transformation. Brother Kavish Rai from Mauritius. Sister Uttishta Mangar, Mauritius. Le 4 et 5 juillet, le Sri Satya Sai Global Council qui organise le Center Leaders Conference. Sa conférence-là qui accueillait plus de 1200 délégués sortis depuis 34 pays dans le monde. L'île Maurice, qui gagne la responsabilité, occupe registration et accommodation pour sa bande déléguée-là. Les jeunes de l'île Maurice, qui aussi gagnent le privilège, participent dans la procession cérémonie d'ouverture comme porte-drapeau. Quelques 5 dévots qui aussi participent dans Vedam Procession poussent à l'événement-là. Tiena aussi l'inauguration de Sai Hira Convention Center le 4 juillet 2023 par le Premier ministre de l'Inde, Shri Narendranath Modi. Sa bijou architecturelle et technologique-là
trouve dans la cour de l'ashram de Prashanti Nilayam que de ban Mauriciens qui gagnent l'occasion d'assister à l'ouverture. L'autre événement qui était organisé à Puttaparthi, c'était le pèlerinage zone 8 et 9 du Sri Sathya Sai Global Council du 7 au 12 juillet. Ces deux zones-là regroupent un pays de la Moyen-Orient et l'Afrique respectivement. Plusieurs activités sont organisées pendant le pèlerinage. Entre autres, distribution commission et vêtements, refaire la peinture pour une école et planter un pied dans la course à l'école là qui trouve dans le village de Jagrapalli. Tout ça bonne activité là organisée avec bénédiction de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. L'important nous rappelle que seul bénéficiaire de tout ça bonne bonne action là, c'est la personne qui fait sa bonne activité de service là avec se proclamer sans demande quitteuse ou quitte gratitude en retour. Bien au contraire, c'est lui-même qui recevra un développement spirituel en retour. Jai Sai Ram. Effectivement, comme on nous trouvé, nous faisons beaucoup d'activités et nous tenions à remercier le National Media Team pour sa jolie vidéo qu'ils ont préparée là. Évidemment, Brother Shivraj, comme vous guide sa vidéo là, il me manque Prashanti et m'a envie de retourner à chaque fois. Et maintenant, nous pouvons une chanson intitulée United in Love by Sai qui peut être interprétée par nous young adults. United in love by Sai, no face
watching over us. We are born in the golden age of Zion. We are blessed, we are blessed, we are blessed. We are born in the golden age of Zion. We are blessed, we are blessed, we are blessed. We are blessed, we are blessed, we are blessed. We are blessed, we are blessed, we are blessed. Wow! Une jolie chanson qui finit chanter pour nous, ban young adults. Je suis d'accord avec vous, Brother Shivraj. Sa chanson-là, il est composée par Sister Roshni Nubin, nous Deputy National Spiritual Coordinator. Nous prenons le plaisir d'écouter faire un speech. हरि भजन बिना सुख शांति नहीं. Om Shri Sai Ram. Swami Janu, there is no sadhana more effective than the chanting of God's name, c'est-à-dire nous besoin prendre ce nom pour nous capables richly. Et ça aussi, in perfect line with bhav, rag and tal. Donc, je propose un petit peu le bhajan singing, Sai bhajan singing. Donc, Shri Satya Sai cause beaucoup les trois petits mots, bhav, rag and tal, quand nous chantons bhajan. C'est the three main pillars in bhajan singing. Bhav, c'est quoi? C'est quand nous amène feelings dans nos bhajan. Quand nous chantons un bhajan, nous apportons feelings pour, comment dire, nous praise God. Deuxième, c'est rag. C'est une mélodie qui est dans un bhajan. Nous besoin feel ça une note qui est là, ça une note de musique qui est dans un bhajan. Et troisième, c'est tal. C'est-à-dire nous chantons dans le rythme et dans le temps. C'est ça trois main choses qui nous sont dans bhajan singing. Maintenant, Swami incluse aussi les 4 types de Sankirtan. Sankirtan, c'est quoi? C'est le groupe singing. Bhajan singing, c'est nous chante en groupe. Nous avons 4 types de Sankirtan. Premièrement, nous avons le Guna Sankirtan. C'est quoi le Guna Sankirtan? Quand nous praise the Lord à travers nos bhajan. Par exemple, quand nous disons Anand Maya Bhagavan, He Prem Maya Bhagavan. Alors là, nous pouvons praise Swami, nous pouvons dire Swami, tu es en plein d'amour, you are the God of love. Ça, c'est premier Sankirtan qui l'ingène. Deuxième, c'est le Lila Sankirtana. C'est quoi le Lila Sankirtana? Quand nous chantons nos bhajans et nous get absorbed in that bhajan. Ça, c'est le Lila Sankirtana. Un exemple, par exemple, nous avons dévot de Lord Krishna, que de danser et de chanter en même temps. Par exemple, quand nous disons Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors, nous avons dévots that get absorbed in that kind of Sankirtana. Troisièmement, nous avons le Bhava Sankirtana. C'est quoi le Bhava Sankirtana? C'est pour montrer nous l'amour à God. Par exemple, nous avons le famous bhajan हमको तुमसे प्यार कितना साई तुम ही जानते. Nous apporte le bhav dans nos chansons, dans nos bhajans, pour nous montrer, Swami, combien nous comptons. Et le dernier type de Sankirtana, c'est le Nam Sankirtana, que nous prend le différent nom de nos Devi Devta. Alors nous Sai devotees, nous prions Swami comme Ram, Krishna, Allah, Jesus. Donc, un petit exemple qui me donne, c'est par exemple, quand nous chantons le bhajan, Govind bolo, Gopal bolo, Ram Nam bolo, Hari Nam bolo, Allah Sai, Yeshu Nanak. Ça, c'est le dernier type de Sankirtana. Donc,
dans le Sai Bhajans, nous avons tous les 4 types de Sankirtana. Et aussi, Swami dit à nous comment nous pratiquons le bhajan. Le bhajanam, comment nous pratiquons. The bhajan singing is the process that originates in the heart, not from the lips or the tongue. Bien sûr, nous servons nous la bouche pour nous chanter, mais aussi qui sortit directement dans nos cœurs. Maintenant, pour terminer, je peux dire que normalement, un Sai Bhajan, quand nous chantons, c'est comme si nous rentrons dans un avion divin, bien sûr, quand nous avons le pilote. Le pilote, c'est celui qui peut piloter l'avion, c'est le lead singer, c'est-à-dire lui-même qui chante les premières lignes du kirtan. Et puis ça, nous avons les chorus singers qui, comme si c'est un passager de l'avion. Et nous avons le cabin crew. Le cabin crew, c'est qui? C'est un musicien. Par exemple, nous avons le harmonium player, nous avons le tabla player et celui qui peut jouer manjira. Donc ça, c'est un cabin crew, c'est un musicien. Donc, quand nous faisons Sai Bhajan, les comédiens, nous pouvons prendre l'avion, nous pouvons décoller avec sûreté, avec sécurité, et nous atterrir avec sûreté et sécurité. Ça, c'est pour nous montrer comment nous chantons sa Sai Bhajan avec plein de bhav et en rag et tal. Bon, pour vous montrer plus de clarité sur tout ce qu'ils m'ont dit, nous allons get un petit coup, nous allons Young Adults de Sri Satya Sai Overseas Organization of Mauritius. Nous allons get nous Young Adults faire une petite performance d'une session de Sai Bhajans. Jai Sai Ram. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. 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 Vidya Buddhi Sarva Siddhi Suranjana. 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 Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Jaya Hiramba Shri Jagadamba Nandana. 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 Ekdanta Dayavanta Shubhanana. Ekadanta Dayavanta Shubhanana. Ekdanta Dayavanta Shubhanana. Ekadanta Dayavanta Shubhanana. Mangaladayaka Shri Vinayaka Vandana. Mangaladayaka Shri Vinayaka Vandana. Jaya Mangaladayaka Shri Vinayaka Vandana. Jaya Mangaladayaka Shri Vinayaka Vandana. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Vidya Buddhi Sarva Siddhi Suranjana. Vidya Buddhi Sarva Siddhi Suranjana. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Jaya Shri Ganesha Vignanasha Gajanana. Jaya Hiramba Shri Jagadamba
हिरम्बा नंदना जय हिरम्बा श्री जगदम्बा नंदना एक दंता दयावंत शुभानना एक दंता दयावंत शुभानना मंगलदायक श्री विनायक वंदना मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना सीतारामा मंगलधामा वैदेही प्रियरामा सीतारामा मंगलधामा वैदेही प्रियराम जय जय रामा सुंदर रामा सीता मोहन राम जय जय रामा सुंदर रामा सीता मोहन राम साई बाबा साई बाबा अयोध्यवासी रघुकुल रामा भरत निवासी साई रामा अयोध्यवासी रघुकुल रामा भरत निवासी साई राम साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा ओम नमः शिवाय शिवाय नमो 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 शिव शिव हर हर हराय नमो हर हर शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव हर हर हराय नमो हर हर शिव शिव शिवाय नमो हर हर महादेवा 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 ओम नमः शिवाय शिवाय नमो 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 डम 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 रूबाजे डम 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 डमरू बाजे धिमि तक मृदंग बाजे धीमितक मृदंग बाजे हर हर महादेवा 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 राम हरि राम
कृष्ण केशव माधव राम राघव राम राघव राम राघव रघुवीरा कृष्ण केशव माधव राम राघव राम राघव राम राघव रघुवीरा ईश्वराम्बा प्रिय नंदना ईश्वराम्बा प्रिय नंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना साई जय जगवंदना ईश्वराम्बा प्रिय नंदना ईश्वराम्बा प्रिय नंदना रत्नाकर कुलभूषणा रत्नाकर कुलभूषणा राजीव नयना नारायणा राजीव नयना नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा हरि 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 नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे अल्लाह ईश्वर साई हरे अल्लाह ईश्वर साई हरे नानक यीशु बुद्ध हरे नानक यीशु बुद्ध हरे राष्ट्र महावीर साई हरे राष्ट्र महावीर साई हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे राम हरे साई कृष्ण 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 हरे दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम आनंददायक श्याम आनंददायक श्याम प्रेमामृत भगवान प्रेमामृत भगवान जय 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 साई राम जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम बोलो जय 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 साई राम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम 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 साईनाथ सुब्रमण्यम साईनाथ सुब्रमण्यम साईनाथ सुब्रमण्यम साईनाथ सुब्रमण्यम साईनाथ सुब्रमण्यम
Subramanyam Subramanyam Shanmukhanatha Subramanyam 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 Sainatha Subramanyam. Et voilà, Brother Kunal, nous arrivons à la fin de nos programmes. Oui, Brother Shivraj. Et nous espérons qu'ils ont tous bien apprécié ce programme-là. Sur ce, nous souhaitons à Swami a very happy birthday. Et à tout le monde, nous souhaitons aussi a very happy birthday. Jai Sai Ram.